Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start congestive heart failure under pathophysiology unit 2nd. In this video we will talk about congestive heart failure introduction, heart failure types, compensatory mechanism, etiology and pathophysiology, symptoms and its treatment. हार्ट फेलियर होता क्या है? ये एक पैथोफिजियोलॉजिक स्टेट होती है जिसमें कार्डियक फंक्शन इम्पेयर्ड होने की वजह से एडिक्वेट सर्कुलेशन फॉर मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ टिश्यूज़ नहीं पहुंच पाता है और क्रोनिक फॉर्म में जब ये होता है उसे बोला जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर में एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर आते हैं। एक्यूट हार्ट फेलियर में सडन और रैपिड डेवलपमेंट होता है और ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, लाइक मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मीनिंग होता है सडन ब्लॉक अगर आर्टरी का हो जाए तो। सेकेंड वन, लार्ज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, valve rupture, cardiac tamponade, acute viral myocarditis that is inflammation of heart muscle and certain reduction होता है cardiac output में जिससे systemic hypertension होता है, बट एडिमा की कंडीशन नहीं आती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर धीरे धीरे डेवलप होता है और ये हो सकता है मायोकार्डियल इस्केमिया फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोटिक CAD that is coronary artery disease से multivalvular heart disease, systemic arterial hypertension and progression of acute into chronic failure. Compensatory mechanism like tachycardia, cardiac dilation etc. try to adjust so as to maintain cardiac output. In its etiology, intrinsic pump failure. This is the most common and most important cause of congestive heart failure. In this, ventricular muscle gets weakened due to diseases like ISD, ischemic heart disease, myocarditis, etc. so that heart fails to act as an efficient pump. Second one, increased workload on heart. It can be mechanical load either in form of pressure or volume load that increase the myocardial demand and leads to myocardial failure. Third one is impaired filling of cardiac chambers. Cardiac tamponade may result in decrease in cardiac output and cardiac failure. Example, hemopericardium and hydropericardium. Tamponade का मीनिंग होता है पेरिकार्डियल सैक में किसी फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना जिससे वो कंप्रेस करे हार्ट को। What is compensatory mechanism? When there is an alteration in natural function, body takes some action to continue that physiological function that is known as compensatory mechanism. In case of congestive heart failure, there are cardiac hypertrophy and dilation and tachycardia. Cardiac hypertrophy meaning is increase in size and weight of myocardium, and that is the result from increased pressure load. After hypertrophy, cardiac dilation takes place. Due to the stress leads to accumulation of excessive volume of blood in chamber of heart, which will cause increase in length of myocardial fibers, that is known as cardiac dilation. Tachycardia is the increase in heart rate due to action of norepinephrine. Now, pathophysiology of congestive heart failure. जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है तब बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स को ऑन कर देती है, लाइक activation of sympathetic nervous system and activation of RAS system. Activation of norepinephrine acyl natriuretic peptide comes in sympathetic nervous system activation, which will lead to tachycardia, that is increase in heart rate, and activation of renin angiotensin aldosterone mechanism leads to sodium and water retention. These both the things further stress the myocardium and leads to
congestive heart failure. There are some symptoms of this disease like chest में पेन होना, fatigue, थकान होना, inability to exercise क्योंकि मसल्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचा पाता है ड्यू टू लेस ब्लड पम्प, एंड फास्ट ब्रीथिंग भी देखी जाती है. And other symptoms are swollen legs or weight gain due to water retention in the body. And treatment includes surgery like coronary artery bypass surgery. Self care में आता है physical exercise करना, quit smoking and low sodium diet को लेना. Medication में include है vasodilators. Examples of vasodilators includes nitroprusside, nitroglycerin and captopril. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for the latest updates. Stay tuned on my channel by clicking the bell icon. If you have any query, then please write it in the comment box. You can also suggest the topic for the video in the comment box.